aware of what it's about. But let's shift our attention now to Maharashtra. Well, viewers, remember, over the last several weeks now, the political landscape has been dominated by a political showdown surrounding the Mughal Emperor Aurangzeb and his tomb. The release of the recent movie from Bollywood, Chhaava, has only acted as a catalyst to this. It triggered some sharp political reactions as well. And amid this chorus for removing the Mughal ruler's tomb, the Maharashtra Congress chief has now quoted some controversy, comparing the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis to Aurangzeb. He said that Fadnavis is as cruel as the Mughal king and that the Maharashtra Chief Minister governs a state based on religion, just like Aurangzeb. औरंगजेब हा क्रूर शासक होता. औरंगजेबाने स्वतःच्या वडिलांना जेलमध्ये टाकलं. स्वतःचा मोठा भाऊ जो संविधानाच्या विचाराचा होता, सेक्युलर विचाराचा, दाराशिखा, याचा खून केला. नुसता खूनच केला नाही तर दाराशिखाचं मुंडकं कापून पूर्ण दिल्लीमध्ये फिरवलं. स्वतःचा लहाना भाऊ जो होता त्याला पागल करार दिला, त्याच्यावर विष प्रयोग केला, त्याला मारून टाकलं. आणि सदाकदा धर्माचा आधार हा औरंगजेब घ्यायचा. औरंगजेब कधी हजला पण गेला नाही आणि हा क्रूर शासक होता. आज देवेंद्र फडणवीसही तेवढेच क्रूर आहेत. सदाकदा धर्माचा आधार घेतात आहे, मात्र संतोष देशमुख सारख्या हत्या ज्या होतात आहे, जिथे खासदारांच्या लेकीबाळी सुरक्षित नाही, हा प्रकार आज दुर्दैवानं आज महाराष्ट्रात हा देवेंद्र फडणवीस सारखाच आहे. त्यामुळे औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एकसारखा आहे. It was not just the Congress that took potshots at the Maharashtra Chief Minister. The UBT Sena, in their editorial Samna, also slammed Devendra Fadnavis, saying that the Maharashtra Chief Minister is misusing Chhatrapati Shivaji's name for politics and that his idea of Hindu Swaraj has been insulted. In fact, Sanjay Raut also opposed the removal of Aurangzeb's tomb, saying that the grave is a symbol of Chhatrapati Shivaji Maharaj's valor. He said Aurangzeb could not defeat the Marathas despite fighting for 25 years. शौर्य का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक कभी टूटना नहीं चाहिए, ये हमारी भूमिका है. छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से इतना बड़ा युद्ध किया है मराठाओं ने. छत्रपति जी की मृत्यु के बाद भी 25 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में लड़ता रहा, लेकिन विजय नहीं प्राप्त कर सका. ये आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से दिखना चाहिए, चाहे अफजल खान की कबर हो या चाहे औरंगजेब की कबर हो. अगर इतिहास कोई समझने को तैयार नहीं तो इतिहास के शत्रु है, दुश्मन इतिहास के. On the other hand, the Chief Minister retaliated against all of his detractors, vowing to stop the glorification of Aurangzeb in the state. Fadnavis reiterated that the Mughal Emperor's tomb has to be removed. In fact, he also lamented that the grave is protected by the Archaeological Survey of India and the state is now forced to maintain it. आज यातनं एक संदेश निश्चितपणे जातो आहे की या देशामध्ये महिमा मंडन होईल तर ते छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचं होईल, औरंगजेबाच्या कबरीचं होणार नाही. हे देखील या निमित्ताने लक्षात घेतलं पाहिजे. आज हे ठीक आहे, खरं म्हणजे त्या औरंग्याची कबर कशाला हवी, परंतु आपल्याला देखील कल्पना आहे की एएसआयने त्याला 50 वर्षापूर्वी संरक्षित म्हणून अशा प्रकारचं त्या ठिकाणी स्थळ म्हणून घोषित केलेलं आहे आणि म्हणून त्याचं संरक्षण देखील करायची जबाबदारी ही राज्य सरकारवर आणि केंद्र सरकारवर येऊन पडलेली आहे. काय दुर्दैव आहे, ज्या औरंग्याने आमच्या हजारो लोकांना मारलं त्याच्याच कबरीचं संरक्षण आम्हाला करावं लागतं. Meanwhile, the chorus calling for the removal of Aurangzeb's tomb is also gaining momentum. The Maharashtra Deputy Chief Minister Eknath Shinde also said that it's the wish of lakhs of Shiv Bhakts to see Aurangzeb's tomb removed. And he said that there is a lot of support coming in from across the state. In fact, the Union Minister Ramdas Athavale also backed the suggestion. संभाजी महाराजांचं शौर्य आणि औरंगजेबाचं कौर्याची जी काय परिसीमा त्यांनी गाठली होती आणि अशा औरंग्याच्या आठवणी किंवा त्याच्या निशाणी या महाराष्ट्रामध्ये कशाला पाहिजे, ही भावना जी आहे ही या तमाम शिवभक्तांची, त्याचा आदर केला पाहिजे आणि त्यांची भावना बरोबर आहे. त्यांची भावना जी आहे तीच माझी भावना आहे. जो देशभक्त असेल, राष्ट्रभक्त असेल, त्यांनी औरंग्याच्या कबरीचं उदात्तीकरण करता कामा नये, कारण त्यांनी आपल्या देशावर, आपल्या महाराष्ट्रावर चाल करून आला.
मुझे लगता है कि औरंगजेब एक बहुत नीच आदमी था और उन्होंने मतलब संभाजी राज्य पर हमला करके उनकी हत्या करने का काम किया था। औरंगजेब की जो कब्र है तो उसको हटाने की मांग हो रही है। इतने सालों में तो मांग नहीं हुई थी, लेकिन अभी अभी छावा फिल्म देखने के बाद और पूरे देश भर में ये लोग देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी क्या करना है। माननीय देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी, अजित दादा पवार है, इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो, किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, ऐसा निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। My colleague Aranil Saradekar is joining us on the broadcast with the details of the politics around it. Well, Aranil, over the last several days and weeks now, we've seen a lot of politics around the tomb of Aurangzeb and Aurangzeb as well. And now in the latest, while on one hand, some leaders, including the UBT, are saying that the tomb should not be removed, the BJP as well as the Shiv Sena are saying that there is a chorus across the state to remove it. Well, amidst the entire controversy as well as the multiple protests that have been held by VHP as well as the Bajrang Dal, as many as more than 50 places across Maharashtra, they held a protest. Their demand is that the tomb of Aurangzeb should be relocated outside Maharashtra. They don't want the tomb of the Mughal emperor to be in Chhatrapati Sambhajinagar. If there was one person, historical figure, who can draw out extreme polarized reactions from different political parties, different religious organizations as well, that was always going to be Aurangzeb. Be it his name. The city's name was first Aurangabad. When Uddhav Thackeray was leaving the government on the last day of his cabinet, he immediately changed it to Sambhajinagar. Then Eknath Shinde had assumed power. He basically got into power. He made it as Chhatrapati Sambhajinagar. The kind of vociferous hate that is there for Aurangzeb, it is there from all the corners, amongst all the political parties as well. Because everybody believes that the way in which Chhatrapati Sambhaji Maharaj was mercilessly tortured and killed by Aurangzeb in Sangameshwar, which is basically in Konkan, that cannot be accepted. There is a different kind of a reaction that has been, explanation rather, that is coming in from Uddhav Thakeray's party. Sanjay Raut, in their mouthpiece Samna, and Sanjay Raut basically is saying that there was a 26-year of war that was that happened between Aurangzeb when Aurangzeb relocated his capital from Delhi, from basically Delhi to Chhatrapati Sambhajinagar, that is Aurangabad. Invoking that history, the Chief Minister also said that it is the state's misfortune that because it is an ASI protected site, the state has no option but to actually protect it. Aranil, I request you to stay with us. My apologies. We just want to play out what the Maharashtra Congress chief has said as well, because amid this debate that has come in, his statement on Fadnavis renewed the rivalry between the BJP and the opposition parties, with the BJP leader saying that the statement exposing the Aurangzeb mindset of the Congress. महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी की तुलना औरंगजेब से करते हैं। कहते हैं वो औरंगजेब की तरह क्रूर है, औरंगजेब की तरह काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की औरंगजेबी मानसिकता का यह परिचय है। वैसे तो औरंगजेब की तरह कौन पेश आता है, कौन जिन्ना की मानसिकता लेकर बजट में भी हिंदू मुस्लिम करता है, ये सबके सामने है। पर सवाल ये बनता है कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, जो एक संवैधानिक पद पर बैठे, उनको इस प्रकार की, वो ये कहना चाहती है कि जनता ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो औरंगजेबी है। मतलब ये जनता का अपमान है, महाराष्ट्र की जनता का अपमान। प्रधानमंत्री को भी 150 गालियां इन्होंने दी है, अब देवेंद्र फडणवीस जी को भी गालियां बक रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी मानसिकता संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करने की है। जो औरंगजेब की औलादे हैं उनके ही मुंह पे औरंगजेब का नाम आता है। कांग्रेसियों की जड़ें कहां जुड़ी हुई हैं वो किसी से छुपा नहीं है। अगर कांग्रेसी बार बार अपने मुंह पे औरंगजेब का नाम लाते हैं तो ये खुद भी औरंगजेब की ही औलादे हैं। On the other hand, opposition leaders have accused the BJP of spreading hatred and dividing society. अब इनकी इस मानसिकता के लोगों का, मेरे पास तो मैंने बताया ना कि आप नफरत फैला के कहां जाओगे। इन 25 करोड़ लोगों को रास्ता बता दो, कहां जाएंगे, रास्ता बता दो कहां जाएंगे, क्या करना चाहते हो आप? Not only that, that's not a new thing. They were going on saying that. They have said about the mosque also, 91 Act they want to distort and then do all these kind of things.
So they are provoking. They are really putting fire on the fuel. That kind of thing they are doing. It is a high time to realize their real color, They want to spoil the communal harmony of the country and provoking the entire situation, precipitating the things in that way. Everybody should realize their real color. Now, amidst the political fireworks, the Vishwa Hindu Parishad and Bajrang Dal hit the streets today in Chhatrapati Sambhaji Nagar, demanding the removal of the Mughal emperor's tomb. After a protest rally, they also submitted a memorandum to the district collector stating their demand. इस शहर को औरंगजेब का नाम निकाल के छत्रपति संभाजी नगर ये नाम देना चाहिए। ऐसी पहली जाहिर मांग किसी सभा में अगर किसी व्यक्ति ने, किसी महापुरुष ने की रही तो उनका नाम है स्वर्गीय बाला साहब जी ठाकरे। उनकी भूमिका थी कि इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर होना चाहिए। उसका आंदोलन लेके 25 साल तक लोगों ने लड़ाई की और उसके बाद में इस शहर का नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ और इस औरंगजेब का नाम इस शहर से मिट गया। उसी प्रकार से अभी ये जो कब्र है, ये कब्र यहाँ से हटानी चाहिए, ये हमारी मांग है। स्पष्ट रूप से एक ही मांग है कि छत्रपति संभाजी नगर में जैसे औरंगजेब का नाम निकालकर छत्रपति संभाजी महाराज का नाम यहाँ पे दिया गया, आने वाले समय में ये जो कब्र यहाँ पे है, औरंगजेब का जो निशान है, ये निशान यहाँ से निकाल देना चाहिए, यही हमारी मांग है बस। So the politics around it continues. We're keeping a track of that. Thanking my colleague Arunil for joining us with those details and slipping into a very short break here. Don't go anywhere. We'll be right back.